Like, subscribe, and get notified. This traffic jam is a regular scene at Florian Vas Junction in Gogol, Margaon after the authorities decided to install a traffic signal here and let it continue without proper calibration to the needs of the junction. 50, sometimes 70 cars line up on the internal roads and also the main roads leading to Arlem and Ravanfond. Commuters and local businesses have taken a bad beating due to the mess. Coordinator of Goa Can Roland Martin said that it is up to the panchayats and the municipal councils to activate their traffic management committees to manage the traffic chaos that is happening in almost all the towns of Goa. In absence of a traffic management plan, no matter how many traffic police are put to man the roads, chaos will continue to occur, leaving people to suffer perennially. सिग्नल से ट्रैफिक होती है, ट्रैफिक से बार बार एक्सीडेंट होता है, एक दूसरे गाड़ी जाके पीछे लग जाती है और पब्लिक को चलने के लिए छोटा रास्ता है और सर्कल भी छोटा है, तो इसलिए सिग्नल की जरूरी सिर्फ ब्रेक स्टेयर पर लगाए तो बहुत है बस, और कोई जरूरी दोनों तरफ ब्रेक स्टेयर पर लगाए तो भीड़ नहीं होती है। और यहाँ पे अभी बहुत कंजस्टेड हो रहा है। हाँ, नहीं वो तो आगे सर्कल है बड़ा तो ये चलता है, ये छोटा सर्कल है नहीं, और रास्ता बिल्कुल चौड़ा नहीं है, रास्ता बिल्कुल छोटा है, इसके लिए बहुत तकलीफ है। और वो सामने जो चार बंगले उनको तो बाहर निकलने की भी जरूरी नहीं है, इतना ट्रैफिक होता है। हाँ, इतना ट्रैफिक होता है। तो ज़्यादा और दूसरा वो हाईवे में दिया वो 100 सेकंड का दिया, वो कम करना चाहिए, चारों को एक सरका देना चाहिए तो फिर भी चलता है। ऐसा ज़्यादा से टाइम कौन से टाइम पे यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक होती है? सुबह और शाम को, और पूरे दिन ज़्यादा ट्रैफिक होता ही रहता है कभी लिए, खाली दोपहर को 2 घंटा कम होता है। ये हाईवे से हमारा 50 मीटर दूर है शॉप, लेकिन हमारे शॉप का इतना भीड़ रहता है कि हमारे ना तो कस्टमर रुक सकते हैं, ना कोई कस्टमर गाड़ी पार्किंग कर सकता है, सब भाग जाता है। और यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर तक ट्रैफिक रहता है, अनुराधा बिल्डिंग तक ट्रैफिक जाम रहता है। सर्कल से अनुराधा बिल्डिंग तक कम से कम वो डिस्टेंस 200-300 मीटर तो ज़्यादा होगा, होगा, लेकिन कम नहीं है। ऐसा कभी भी ट्रैफिक का ज़्यादा झंझट है, क्योंकि पहले कभी कोई भीड़ भाड़ नहीं होता, ट्रैफिक नहीं होता। तो अभी सिग्नल के वजह से वो तभी थोड़ा अभी ज़्यादा ट्रैफिक होने लगा। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। There have been many complaints in the last few days about traffic jams taking place in various parts of the state, and this is happening mostly at junctions where either the traffic signals are not working or there are no traffic signals. Basically, this has put people to hardship, particularly parents, at a time where children have to go to schools, as the schools have now reopened in full swing. It's very important that the concerned panchayats and municipalities take up this issue for discussion, primarily in their road safety and traffic management committees, and address the matter to the concerned agencies, predominantly the traffic police and the Directorate of Transport. Now, unless these matters are put before the authorities in a very consistent manner, action is not going to take place in a permanent way. There are some temporary solutions wherein the concerned DYSPs are trying to put traffic police outside schools and at certain junctions, but that is going to be only of a temporary nature, as there are also serious problems with the roads due to the works undertaken by the electricity department for underground cabling, wherein the patching up has not been done. This results in also people trying to avoid the damaged stretch of the road, and therefore they are limiting their activity to only the tarred section. This is also contributing to the jams that are taking place. So our view from Goa Can is very clear that there has to be a consistent intervention immediately by the municipal authorities or panchayat authorities, wherever it may be. But more important, the traffic police need to come out with an action plan which is going to address these jams. We from Goa Can will definitely also take up the issue at the forthcoming meeting of the road safety and committee at the district level to be held in Margaon, and we will also take it up in North Goa with the monitoring cell, because this is affecting people, and the reports have already been appearing in various sections of the media.
So the time has come for us to, have a comprehensive action plan on addressing these traffic jams. Mohit Kharangate for Herald TV.